गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नो डिटेंशन पॉलिसी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अबॉलिश करने का फैसला लिया है नो डिटेंशन पॉलिसी को, जो क्लास फिफ्थ और क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्ट करती थी। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्कूल्स आते हैं उनमें ये जो पॉलिसी है अब नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो जैसे कि लगभग 3,000 ऐसे सेंट्रल स्कूल्स हैं जिसमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स ये सब आते हैं। वहाँ पर ये पॉलिसी नहीं होगी, मतलब अब क्लास फिफ्थ और क्लास एट्थ के बच्चे जो हैं वो फेल हो सकेंगे। ठीक है। तो अब हम ये क्यों फैसला लिया गया है, ताकि लर्निंग आउटकम्स और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव किया जा सके। तो हो क्या रहा था कि जब आप बच्चों को फेल ही नहीं करोगे, चाहे वो कितनी भी पुअर परफॉर्मेंस दें, तो उससे डिक्लाइन हो रहा था एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में और स्टूडेंट की अकाउंटेबिलिटी में। और इससे ये दिख रहा था कि जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ मिड डे मील के हब बनते जा रहे हैं, सेंटर्स ऑफ लर्निंग नहीं रह गए हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स ने कंप्लेन भी किया था 2016 से ही कि ये स्क्रैप करो पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी जो है यही रिकमेंडेशन दिया कि लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। ठीक है। और पॉलिसी को इसलिए चेंज किया जा रहा है ताकि सीरियसनेस आए बच्चों में पढ़ाई को लेकर। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा न्यू पॉलिसी के अंदर, जो स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे क्लास फिफ्थ या एट्थ में, उनको एक री एग्ज़ामिनेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2 महीने के अंदर अंदर। अगर उसमें भी वो फेल हो गए, फिर उनको जो है वो फेल ही कर दिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा उसी क्लास में। ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है वो फोकस रखेगा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर। और टीचर्स और स्कूल हेड जो है वो टारगेटेड सपोर्ट देते रहेंगे बच्चों को, लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहेंगे। कोई भी चाइल्ड जो है वो एक्सपेल नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लास एट्थ से पहले। ओके। एजुकेटर्स, पेरेंट्स दोनों ने इस मूव को जो है वो अपलॉड किया है, वेलकम किया है। और लेकिन जो कुछ एजुकेशनिस्ट हैं जो पॉलिसी जो आपको सजेशंस देते हैं, उन्होंने कहा है कि इससे ड्रॉप आउट के रेट्स बढ़ जाएंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन का जो गोल है वो नहीं अचीव हो पाएगा। तो क्या रिकमेंडेशंस क्या रिकमेंडेशंस हैं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करो जो रिस्क पर स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनके फेलियर को ही रोका जा सके। और लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करो, ताकि जो है थ्रू आउट द ईयर उसको आइडेंटिफाई करते रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मोमेंट पर ही आकर उसे आइडेंटिफाई किया जाए। और स्कूल हेड जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो प्रोग्रेस को मॉनिटर भी करते रहे बच्चों की, ताकि उन्हें एडिक्वेट सपोर्ट भी दिया जा सके। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर जो है उनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था आई जे सी को यूएन जनरल असेंबली द्वारा। एक न्यू इंटरनल जस्टिस सिस्टम का ये पार्ट है, ताकि इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी आ सके जस्टिस सिस्टम जो यूनाइटेड नेशंस का है उसमें। तो आईजीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो यूएन सेक्रेटरी जनरल ही अपॉइंट करते हैं। और इसमें इनके 5 मेंबर्स होते हैं, एक स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, और 2 डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नल ज्यूरिस्ट्स होते हैं, फिर जो एक चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, सूटेबल कैंडिडेट्स जो है वो उनको सर्च करते हैं जो पोजीशन ऑफ जजेस पर जा सकते हैं, खासकर यूएन डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में और यूएन अपील्स ट्रिब्यूनल में। जनरल असेंबली को भी रिकमेंडेशन देते हैं 2 to 3 कैंडिडेट्स के हर वैकेंसी को से रिलेटेड। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता है, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यूएन जनरल असेंबली का, उसके ऊपर अपनी व्यूज़ देते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायोबिटुमिन। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने कहा इनाग्रेट किया है 1 किलोमीटर का स्ट्रेच, एशिया का पहला हाईवे जो कि बायोबिटुमिन ब्लेंडेड सरफेस से बना है। तो बायोबिटुमिन क्या है? पेट्रोलियम फ्री ऑल्टरनेटिव है बिटुमिन का। और ये इसको डिज़ाइन किया गया है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन में। और इसको नॉन पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाया जाता है, और जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गए, या फिर दोनों। और ये सस्टेनेबल है, मतलब रिन्यूएबल मटेरियल से इसको बनाया जाता है, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल से डिराइव किया जाता है, और बहुत ही कम टॉक्सिक है, डेट्रीमेंटल भी कम है इन्वायरमेंट पे।
तो रोड पेविंग, रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, इन सब के लिए इसको जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बिटुमिन क्या है? बिटुमिन एक डेंस हाईली विस्कस पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन होता है, उसी का ऑल्टरनेटिव जो है वो हमने बायो बिटुमिन बनाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूथ कोलैब। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है, नीति आयोग और यूएनडीपी ने मिलकर सिटी फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप करके 7th एडिशन जो है यूथ कोलैब का जो है वो लॉन्च किया है, जिसको एक्चुअली 2017 में लॉन्च किया गया था यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन द्वारा, ताकि यूथ को जो है एम्पावर किया जा सके कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन में हमें हेल्प करें। इंडिया में जो ये यूथ कोलैब है इसको 2019 में लॉन्च किया गया था अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर, नीति आयोग के साथ मिलकर। और 2024 के एंड तक यूथ को लैब ने लगभग 6 नेशनल थीम स्पेसिफिक यूथ सोशल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डायलॉग्स इंडिया में कंडक्ट किए हैं। इस बार जो 7th एडिशन है उसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी जो है के ऊपर फोकस रहेगा। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? फ्लैगशिप इनिशिएटिव नीति आयोग का 2016 से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें इन्वायरमेंट ऑफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस स्कूल्स, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज जो है इंक्लूडिंग एमएसएमईज पर फोकस रहता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सागर आइलैंड। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सागर आइलैंड जो है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर गंगा सागर मेला होता है हर साल जनवरी में, वो क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहा है। तो सागर आइलैंड जो है इसको हम गंगा सागर या सागर द्वीप भी कहते हैं। गंगा के डेल्टा में लोकेटेड है ये, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल के पास। तो इसमें 43 विलेजेस आते हैं जो कि सेपरेटेड हैं बाय रिवर मुरी गंगा बटाला। और पिलग्रिम्स यहाँ पर आकर मकर संक्रांति फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हैं इन द ऑनर ऑफ सन। कपिल मुनि टेम्पल जो है ऑन दिस आइलैंड, वो एक पॉपुलर पिलग्रिम सेंटर है। कपिल मुनि क्या है? कपिल या फिर महर्षि कपिल एक वैदिक सेज थे, जो कि ओरिजिनल प्रोपोनेंट थे समख्या सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी के। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की जो रिलायंस है चाइना के ऊपर वो बहुत बढ़ती जा रही है क्रिटिकल मिनरल्स पर। तो उसे कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्रिटिकल मिनरल समिट कंडक्ट की गई है। तो पहले तो हम समझते हैं क्रिटिकल मिनरल्स क्या है। तो ये मिनरल्स एसेंशियल होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और कहा जाता है कि फ्यूचर की जो ग्लोबल इकोनॉमी है हमारी, वो डिपेंड रहेगी इन क्रिटिकल मिनरल्स पर। और जैसे लिथियम हो गया, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम या फिर बाकी के रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये वाइटल है मिनरल्स ग्लोबल ट्रांजिशन को पावर करने के लिए, एक लो कार्बन एमिशंस इकोनॉमी बनाने के लिए और रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल समिट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसको शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन CEEW और IISD के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और इस पे जो है 8 की मिनरल्स के ऊपर इसमें डिस्कशंस की गई। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उन्होंने 30 क्रिटिकल मिनरल जो है इंडिया के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, और यहाँ पे जो कुछ मिनरल्स के नाम दिए हैं जो हम जिसके लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अब क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि चाइना की डोमिनेंस है इन मिनरल प्रोसेसिंग में। लगभग 87% जो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग है वो चाइना कंट्रोल करता है, 58% ऑफ लिथियम रिफाइनिंग चाइना कंट्रोल करता है, 68% ऑफ सिलिकॉन प्रोसेसिंग चाइना कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कश्मीरी पेपियर माश। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 343 ईयर्स हो गए हैं एक्सटिंक्शन के। कश्मीर आर्टिसंस जो है वो डोडो को पेपियर माश में दोबारा से जो है वो एक तरह से लेकर आ रहे हैं। तो अब कश्मीरी पेपियर माश क्या है? एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है कश्मीर वैली का, जो 14th सेंचुरी में मुस्लिम सेंट मीर सैयद अली हमादनी जो है पर्शिया के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये इंट्रिकेट डिज़ाइंस के लिए फेमस है ये क्राफ्ट, जिसमें कि पेपर पल्प का यूज़ किया जाता है। तो प्राइमरीली ये पेपर पल्प से बनता है। इसमें जो है इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं जो है वो है वास, बाउल्स, कप्स, बॉक्सेस, ट्रेज, लैम्प बेसेस। ठीक है, ये डिज़ाइन जो है इसमें फ्लोरल मोटिव्स, फॉरेस्ट प्रिंट्स, ये सब जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। और इसको जो है जीआई टैग भी मिला हुआ है 1999 का जो जीआई एक्ट के अंदर, और इसको कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स के अंदर इसको रजिस्टर भी करवाया जाता है। तो क्रिसमस में लगभग 50,000 पेपियर मैश डोडो मॉडल्स को शिप किया गया है यूरोप और मॉरिशस जैसी मार्केट्स में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन काउंसिल फॉर
रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इन्होंने कुछ चैलेंजेस जो है वो एनालाइज किए हैं जो इंडिया के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रही हैं। तो एफपीओ क्या होते हैं? प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो फार्मर्स बनाते हैं, और ये एक तरह से ऑफ द प्रोड्यूसर्स, बाय द प्रोड्यूसर्स एंड फॉर द प्रोड्यूसर्स की तरह ये ऑपरेट करते हैं। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं प्रमोट करने के लिए एफपीओज को अक्रॉस इंडिया। तो एफपीओ जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नॉन फार्म आइटम्स और आर्टिसन गुड्स सबके लिए ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा सकती हैं। ओनरशिप जो होती है वो इनके मेंबर फार्मर्स के पास ही होती है। और ये कुछ 3 एक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, कंपनीज एक्ट, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, इन सब के लीगल फ्रेमवर्क्स के अंडर ये एफपीओज जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो ICRIER क्या है? ये एक इंडियन लीडिंग पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक है जिसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये फोकस करता है सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केरला थ्रिसुर पूरम। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव्स इशू किए हैं सेफ्टी और वेलबींग ऑफ एलिफेंट्स इंश्योर करने के लिए थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल जो आने वाला है अगले साल, उसके लिए। तो ये ग्रैंड फेस्टिवल होता है, केरला का कल्चरल और स्पिरिचुअल एसेंस को कैप्चर करता है या शोकेस करता है। इसको हर साल मनाया जाता है मलयालम मंथ ऑफ मेदम में, और इसको इनिशिएट किया गया था राजा राम वर्मा ने, जो कि महाराजा ऑफ कोचीन थे उस समय पर। और कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि सेफ्टी ऑफ एलिफेंट्स पब्लिक और आर्टिस्ट जो है वो इंश्योर करनी है, उसके लिए कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is no detention policy. This topic is important for your governance and social issues. So Indian government has abolished the no detention policy for classes 5 and 8 across the country, across all the central schools which come under the jurisdiction of the Indian government. So about 3,000 central schools, including Kendriya Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sainik schools, Eklavya Model Residential schools, they all come under the jurisdiction of the union government, and the no detention policy has been abolished from these schools. Okay, the aim is to improve learning outcomes and accountability. So the no detention policy was basically that even if a student scores very low marks in class 5th and 8th, he or she would not be failed in those exams. So this policy led to a decline in academic standards and student accountability. Students started taking studies for granted, and it was believed that this policy led schools into just midday meal hubs rather than centers of learning. So by 2016, most states were complaining about this policy, and they supported scrapping this policy. Even national education policy emphasized improved learning outcomes. So this policies aim to instill seriousness in studies while providing remedial measures for underperforming students. So what will happen now is that students who fail the annual exams in class 5th or 8th, they will receive remedial instruction, and they will get an opportunity for re-examination within 2 months. And if they fail even in that re-examination, then they will be detained in those classes. Okay, so examinations will focus on holistic development rather than rote memorization or procedural skills. Teachers and school heads will provide targeted support, identify learning gaps, and closely monitor students' progress during this period. No child, but remember this, that no child will be expelled before completing class 8th. Both educators and parents are supporting this policy because this is important for the seriousness of studies of among the students. But critics are arguing that these detentions may increase school dropout rates, and this would undermine the goal of inclusive education as well. So, what are the recommendations to implement this new policy? Of course, we need to identify early who are the students who are at risk so as to reduce the failures. So we have to focus on addressing the learning gaps throughout the academic year and not just at the end of examination period. School heads should monitor the progress and ensure adequate support for these detained students. Okay. So the next topic is United Nations Internal Justice Council. This topic is important for your international relations. So former Supreme Court Judge Justice Madan B. Lokur was appointed chairperson of the United Nations Internal Justice Council, and
This United Nations Internal Justice Council was established by the UN General Assembly as part of the new internal justice system in order to help ensure independence, professionalism, and accountability in the administration of justice system of the United Nations. So the IJC members, they are appointed by the United Nations Secretary General, and it is composed of 5 members, uh, consisting of a staff representative, a management representative, two distinguished external jurists, and a chairperson. Okay, so the functions of this IGC includes undertaking the search for suitable candidates for the position of judges. When there is a vacancy on the United Nations Dispute Tribunal and United Nations Appeals Tribunal. It also recommends General Assembly 2 to 3 candidates for each vacancy with respect to geographical distribution. It also provides its views on the implementation of the system of administration of justice to the General Assembly. Okay. So the next topic is biobitumen. This topic is important for your environment section. Union Minister for Road Transport has inaugurated a 1 kilometer stretch of Asia's first highway with a biobitumen blended surface. So biobitumen is a petroleum-free alternative to bitumen or asphalt, and it is designed to lower the carbon footprint of road construction. It is made using non-petroleum based renewable resources, and it can be made from vegetable oils, synthetic polymers, or both. So biobitumen is generated from renewable materials, which is an advantage. It is derived from organic materials, and it is less toxic and detrimental to the environment than regular bitumen. Okay, so what are the applications of it? It can be used in road paving, roofing, and waterproofing. So what is bitumen? It's a dense, highly viscous petroleum based hydrocarbon, and it is found in deposits like oil sands and pitch lakes, and or is it is obtained as a residue of the distillation of crude oil. So the next topic is youth collab. This topic is important for your economy section. So Atal Innovation Mission, Niti Aayog, and the United Nations Development Program in partnership with City Foundation have officially launched the 7th edition of Youth Collab. So Youth Collab was co-created in 2017 by UNDP and City Foundation, which aims to empower and invest in the aim is to empower and invest in youth so as to accelerate the implementation of sustainable development goals. In India, Youth Collab was launched in 2019 in collaboration with Atal Innovation Mission, Niti Aayog. As of the end of 2024, Youth Collab has conducted 6 national theme-specific youth social innovation and entrepreneurship dialogues in India through this collaboration. It will focus on empowering young entrepreneurs. This year, the theme is to focus on empowering young entrepreneurs and entrepreneurs with disabilities. What is the Atal Innovation Mission? It is a flagship initiative which was set up by Niti Aayog in 2016. The aim is to create and encourage an environment of innovation and entrepreneurship across schools, educational organizations, research institutes, industries, including the MSMEs. Okay. So the next topic is Sagar Island. This topic is important for your environment section. Sagar Island in West Bengal, where the iconic Ganga Sagar Mela takes place every January, is getting impacted by climate change. So Sagar Island is also known as Ganga Sagar or Sagar Dweep, and it is located in the Ganga Delta, lying on the continental shelf of Bay of Bengal. It consists of 43 villages, and Sagar and Mahisani Islands, they are separated by river Muriganga Batala. So the pilgrims, this is a religious place for Hindus, and the pilgrims celebrate Makar Sankranti festival here in honor of the sun. Kapil Muni temple on the island is a popular pilgrim center. Who is Kapil Muni? Maharishi Kapil is a Vedic sage who is traditionally considered to be the original proponent of the Samakhya system of Indian philosophy. Okay. So the next topic is critical minerals. This topic is important for our economy section. India's reliance on China for critical minerals is increasing, and we're still dependent upon them. So what is critical minerals? So these are essential for economic development and national security. The future of global economy will be underpinned by technologies that depend on critical minerals, and these critical minerals are vital to power the global transition to a low carbon emissions economy and the renewable energy technologies which will be required to meet the net zero commitments of an increasing number of countries around the world. So what is this critical minerals summit? Ministry of Mines in collaboration with Shakti Sustainable Energy Foundation, CEEW, and ISD
has organized this summit to foster collaboration, innovation, and policy dialogue on critical mineral beneficiation and processing. The focus will be on 8 key minerals, including lithium, rare earth elements, graphite, vanadium, and platinum group of minerals. So, Ministry of Mines has listed 30 critical minerals essential for economic and strategic security of India, and India relies entirely on imports of these 10 for 10 critical minerals. Why? Because China is dominating the mineral processing and it is controlling 87% of rare earth processing, 58% of lithium refining, and 68% of silicon processing. Okay. So the next topic is Kashmiri papier mache. This topic is important for your art and culture section. So 343 years after its extinction, Kashmir artisans have given wings to the dodo in papier mache. So Kashmir papier mache is a traditional handicraft of the Kashmir Valley, which was introduced in 14th century by Muslim saint Mir Sayyid Ali Hamadani from Persia. This craft is known for its intricate designs and use of paper pulp to create colorful, richly decorated items. So, so this is made primarily from paper pulp, and the common products include vases, bowls, cups, boxes, trays, and lamp bases. The designs feature floral motifs or forest prints and other intricate patterns symbolizing cultural and ecological themes. So it is also protected under the Geographical Indication Act of 1999, and these are registered also under the Controller General of Patents, Designs, and Trademarks. Over 50,000 papier mache dodo models have been shipped to markets in Europe and Mauritius for Christmas this year. So the next topic is Farmers Producer Organization. This topic is important for your economy section. So Indian Council for Research on International Economic Relations has recently analyzed challenges faced by India's farmer producer organizations and suggested necessary reforms. So what is FPO? FPO is a type of producer organization which is formed by farmers. It operates as an organization of the producers, by the producers, and for the producers. So small farmers Agribusiness Consortium plays a vital role in promoting FPOs across India. A producer organization represents producers of various goods, including agricultural products, non farm items, and artisan goods. The ownership of an FPO lies entirely with its member farmers. Okay, so it operates on the principle of shared decision making and benefits. These FPOs are governed by the Companies Act, uh, Societies Registration Act, and Public Trust Act, and these legal frameworks ensure transparency, accountability, and effective management of FPOs. Okay, so what is ICRIER? So it is a leading Indian policy research think tank which was established in 1981, and it focuses on sectors like agriculture, climate change, digital economy, and economic growth. So the next topic is Kerala's Thrissur Puram. This topic is important for your art and culture section. So Kerala High Court has issued directives to ensure the safety and well-being of elephants and artists during the Thrissur Puram festival, which is a grand festival showcasing Kerala's cultural and spiritual essence. It is celebrated annually in the Malayalam month of Medam. It was initiated by Raja Ram Verma, who was famously known as Saktan Thampuran, the Maharaja of Cochin. This festival contains majestic elephants, traditional orchestra music. Okay, the High Court has issued guidelines to ensure the safety of elephants, public, and artists during the festival. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.